So in the previous class, पिछले class में we have discussed about basic concepts of what is the meaning of speed, what is the meaning of distance, displacement, ये सब ABCD है, physics का ABCD। तो बेटा, why don't you come here, no? तो पहले आ जाओ, take your seat, हम सब here। समझ लो। Okay. So we were discussing about speeds and velocities. Okay. In that, your objective type of questions will start from first topic. Whatever we have discussed till now, it's only pure basic. But actual, all reals will start now, which is called as what is the meaning of average speed? What is the meaning of average speed? Okay. So yesterday we have discussed about what is the meaning of speed. I told you speed is nothing but distance by time. And I also told you that velocity is equal to displacement by time. Okay. So see, generally we use the word speed for objects like bus, speed of a bus, speed of a train, speed of a vehicle, because it does not have any direction. Bus, how do the bus goes? See, the bus travels in different directions. Bus, this is the direction of the bus. If this is your school, okay, and this is your house, then you need to travel in this path. This is the path of a road from your house to your school, and we say that is a speed. Why? Because this is a distance. Okay, for distance there is no proper direction. It goes in multiple directions. Yesterday I told you, isn't it? Distance is not having any particular direction. But I told you yesterday that, what did I tell you? Okay. So next, if it is a displacement, how it will be? It's just a straight line. Okay. I told you about this. Starting point, ending point, just join them. It's going to be displacement. Okay. So speed is nothing but distance by time. So what is the distance here? For example, distance is for example 10 meters from here to here, whereas displacement is only 6 meters. Okay, it has taken a time to travel. A bus has traveled like this, okay, and it has taken a time of 5 seconds. It has taken a time of 5 seconds. How? Chalo. Okay, so this is 10 meters. It has taken 5 seconds. Now, what is this distance? What is displacement here? Displacement is 6 meters, and let us imagine time taken is 3 seconds. So different paths, then it is called a distance because it is a scalar. What is the meaning of scalar? Okay, a brief discussion. Basics of your physics. What is the meaning of scalar? And what is the meaning of vector? Okay, so here one thing you should remember: scalar means has magnitude, but no direction. Okay, this is a vector, has magnitude but and also direction, We can give some of the examples for that. What are the examples we can give? See, scalar, which is having magnitude but no proper direction. Like for example, mass, time, length, okay, distance, okay, speed, work, energy, all these are said to be the examples of scalar. Vector means, the best example is, first thing is displacement and velocity, acceleration, force. Okay, these are all few examples we can say. Force. I'll give one small example to understand what is the meaning of scalar. Scalar means, you can understand a little bit of Urdu, no? Okay, so scalar जिसका मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, डज नॉट हैव डायरेक्शन। बाबू तुम्हारा वेट क्या है? 30 kg, बट वी कॉल वेट इज नथिंग बट, सी, अगर कोई वेट पूछा तो यू कैन से मास इनटू ग्रेविटी. Mass is 30
and G is 10, so your weight is 300 newtons. See, weight is having direction. Weight का कुछ direction है. If you want to measure your own weight, where do you keep the weighing box? Weighing machine कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ठहरेंगे, फिर परेशान होंगे, वजन बढ़ रहा है. Weight is increasing. कल से आधा किलो बढ़ गया, बिरयानी को घुसड़े अंदर, आधा किलो बढ़ गया. Your weight has increased. And no fool will keep, अरे वजन नीचे के करके देख रहा है, ज्यादा दिखता है, दीवार पे लगा. Keeping the weighing machine and touching like this. अरे ऐसा ऐसे दबा के देख रहा है. Weight साइड में रखते कौन तो भी. Weight does not have any attraction. G is not acting sidewards. G is acting downwards. See, G is having particular direction which is always downwards. हाँ भाई VIP हो गया तू, ठीक है बेटा. सो उसको साइलेंट मोड में रखो. ओके ओके, तुम्हारा वायलेंट मोड में है, साइलेंट मोड में रखो. नाउ लेट अस सी हियर. So weight is having particular direction. See your weight, for example, on Earth, if your weight is 60 kg weight, sorry, for example, if your weight is 600 newtons on the Earth, then on the moon, how much it will be? 600 by 6, which is nothing but 100 newtons. 600 newtons means क्या? It can also be written as 60 kg weight. तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हारा वजन कितना है? 60 kg weight. 60 किलो के आप. 60 kg weight. If you want to convert 60 kg weight into newtons, multiply with G. 600 newtons. कहाँ पे? Weight on the Earth. On the moon, your weight is how much? Whatever your weight is on the Earth, it is 1 by 6 times on the moon. So if your weight is 600 on the moon, divide by 6. So your weight is how much? 100 newtons means 10 kg weight. 100 newtons का मतलब 10 kg. तुम यहाँ पर 60 किलो है, मून में गया तो कितना दिखाएगा? It's only 10 kg. अरे माइंस 50 किलो कम हो गया, खुश हो रहे. मेरा 0 साइज है, कोई भी हीरोइन मेरे ऐसी हल्की नहीं है, समझ रहा? ऐसा कैसा हो सकता? You are seeing in moon. See how wonderful things happens in moon if your weight decreases by 6 times. एक तो क्या है मालूम? There is no need of any auto rickshaw or vehicles because ऐसा चलते मालूम मून पे, एक स्टेप इधर डाले तो ऐसा हल्क चलता है पैसा. हाँ, because your weight is less. तो अभी देखो, I'll show you how you will walk on the earth, how you will run on the earth. अर्थ पे ऐसा चलेंगे ना, ऐसा दौड़ेंगे आप, मगर मून पे ऐसा नहीं, ऐसा, because only 10 kg you are. You jump like a kangaroo. हाँ, कंगारू बढ़ाने अवसर मिला है. समझ में आ रही बात? Because your weight has been. See, weight means what? It is having particular direction, and that is going to be what? It's going to be vector. तो इसमें और एक ऐड हो गया weight. All these are vectors. They are having certain direction. Displacement means only one direction, only one particular direction. Next, mass, no direction. अम्मा పోయి 1 kg टमाटर తీసుకురా. माँ बोली बेटा जाओ 1 किलो टमाटर लाओ. 1 घंटे के बाद फिर आके देखे तो भैंस बैठ के, क्या रे टमाटर 1 किलो लाओ तो गैस नहीं, कौन सा डायरेक्शन में तोलना जी? बोले नहीं बोले, अरे पागल है क्या? मास को कोई डायरेक्शन रहता? Mass does not have any direction. See, your mass is same whether you are on the earth, you are on the moon. It is always 60 kgs. What is the meaning of mass? The total material present in your body is same, but G is different. So this is a mass. Time, बाबू टाइम ఎంత అయింది చెప్పవా అంటే ఏ డైరెక్షన్ చెప్పమంటావు? అరే టైం డైరెక్షన్ रहता क्या रे बेवकूफ? ये डायरेक्शन లో పోయినా 3 గంటలు కదా సార్? अरे no direction for time, only magnitude. How much? 3 o'clock. 3 is magnitude. 60 kg means 60 is a magnitude, but mass does not have any direction. Okay, so next if you see here, length. Length है, what is the length of the room? Length of your what is that? Length of your thread or length of your rope. एक rope लिए ఎంత కావాలి? rope pipe लिए, pipe खरीदे, you purchase one pipe. ఒక 10 మీటర్ల పైప్ ఇవ్వండి, ఏ డైరెక్షన్ లేమంటావు? అరే ఆగలే కదా, డైరెక్షన్ रहता पाइप को. So work means what? Work means काम है. कचरा झाड़ो जी, सुबह से कुछ भी नहीं करे, उठो कचरा झाड़ बोल के माँ बोल दी, अम्मा చెప్పింది कचरा కసు నువ్వే అని. కసు నువ్వే बोलते क्या बोल रही है? अम्मा ये डायरेक्शन में नुकमंटा, अरे पागल है क्या रे? ఒక डायरेक्शन में नुको कसु, ऐसा भी झाड़ना पड़ता, वैसा भी झाड़ना पड़ता, पूरा ले आके मूले में जमा कर देना. दैट इज कॉल्ड एज वर्क. अच्छा, वर्क बोलते वक्त एक जोक याद आ रहा, हम बीएड करते वक्त क्या है, लेसन का नाम है यू हैव टू सेट सर्टेन 3 or 4 क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस बना लेके जाना है कि लेसन का नाम जो है बच्चे के मुंह से निकलना. तो उसमें हमारा फ्रेंड एक था, तेलुगु टीचर था, उन्हें
तो లెసన్ పేరేమో టెంకాయ చెట్లు. నువ్వు ఫ్రేమ్ చేయాలన్నమాట క్వశ్చన్స్. 4-5 క్వశ్చన్లు అడిగితే పిల్లోడు టెంకాయ చెట్లు అని వన్ నోట్తో వస్తే నువ్వు సక్సెస్. నీకు 5 మార్క్స్ వస్తాయి. 5 marks పడినట్లు. That is called as motivation. Motivation means you have to ask such a questions that students get motivated and tell the chapter name by themselves. You should not announce the chapter name. You have to ask certain questions that students should tell the what is it, chapter name. अब ये लिख के गया పొద్దున లేसे మీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది, కసునుకుతుంది. नीचे आंसर लिख लिया. ऐसा बोलता बच्चा बोल के एक्सपेक्ट करके కసునుకుతుంది. ఆ పొరక దేంతో తయారు చేసినారు? తాటి చెట్టు, టెంకాయ చెట్టు. टेंकाय चट, हाँ सक्सेस. टेंकाय चट्टू बोल दिया बच्चा. ऐसा क्वेश्चन आता लेके उन्हीं गया. टेंकाय चट्टू आ गया सेकंड क्वेश्चन में बोल के. अब बच्चे बदमाश क्या करे, इस टीचर को सताना. ये चैप्टर का नाम बाहर नहीं बोलना. देख रही चैप्टर का नाम समझ में आया तो बोलना नहीं. इसके 5 मार्क का चले आना, सताने पड़े. पिల్లలు सताना, बच्चे सताने पड़े. अब సార్ जाके क्वेश्चन पूछ रहा, బాబు చాలా మంచి పిల్లలు 5 మార్కులు రావాలరా, నాకు ఇద్దరు ఉన్నా కొడుకులు సరిగ్గా జవాబు చెప్పండి. అచ్చా సార్, అచ్చే వచ్చి చాలా మంచి పిల్లలు మీరంతా. బాబు పొద్దున్న లేస్తే మీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది? ఓహో కసువు నొక్కుతుంది అంటే టెంకాయ చెట్లు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉండేది 10 చాప్టర్లు, దాంట్లో ఒక టెంకాయ చెట్టు. పొద్దున్న నొక్కితే కసువు నొక్కుతుంది అంటే దాంట్లో టెంకాయ చెట్టు. అమ్మ నా కొడుక, ఆహా ఐసా. సార్ పొద్దున్న లేస్తే మా నాయన కాలు మొక్కుతుంది సార్ మా అమ్మ. అబ్బా ఏం భక్తిరా ఎదవా, లెసన్ చాప్టర్ పేరు ఎక్కడో పోయిందో ఏమో, మీ అమ్మ మీ నాయన కాలు మొక్కుతుంది, నాకేమొస్తుంది రా నాయన. ఐసా ఈ మగపిల్లలు అడగకూడదు, బద్మాష్ నా కొడుకు. అమ్మాయిలు చాలా మంచి పిల్లలు. అమ్మ తల్లి నన్ను కాపాడు. చాప్టర్ నేము అమ్మ, నీ అమ్మ పొద్దున్న లేసిన ఏం చేస్తుంది వెళ్తా? అమ్మ నా కొడుక టెంకాయ చెట్లు అడగా. సార్ మా అమ్మ పొద్దున్న లేసిన తాలిబొట్టు కల్లా కదుకుంటుంది సార్, మా నాయన బాగుండాలని. అమ్మ నా కొడుకులాగా ఆ పసిని నికల్ గए इसके, कहाँ से निकलता टेंकाय चट्टू? इसके टेंकाय दिमाग में टेंकाय फुट गया इसके. अरे रे बदमाशा, अरे नहीं होता रे सावल. तो ये क्या है? स्पीड, वर्क, एनर्जी. दे डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. वर्क डज नॉट हैव. मेरे पास मैं काम करा, पैसे दे सर, मैं काम कर दिया, तुम जो भी बोले काम कर दिया. बोले कौन से डायरेक्शन में करा? सर क्या है काम करे तो डायरेक्शन रहता. अच्छा अब एक बॉडी बिल्डर आ गया, भाई मेरे पास बहुत एनर्जी है. अरे कौन से डायरेक्शन में है तेरे को एनर्जी पता? एनर्जी को डायरेक्शन क्या रहता है? पागल है क्या? डंबल ये डायरेक्शन में उठाना, वो डायरेक्शन में उठाना, ऐसा भी करना. डंबल कभी सामने भी करना, चेस्ट के वास्ते है नहीं. सो डंबल को डायरेक्शंस क्या रहता? हर डायरेक्शन में डंबल उठाए तो मजल आते, नहीं बोले तो ये इतना मोटा होता है, ये इतना चूरा रहता. अरे इसको बाइक की शिकायत है, इतना मोटा हो गया, हाथ गिर गया इसका, हाथ पाँव पड़ गया, सर गया इसका. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, नो. सो दिस इज अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर. सो स्पीड is nothing but distance by time. See, scalar by time is a scalar, vector by time is a vector. Speed is a scalar, velocity is a vector. This is a basic concept. But let me discuss about what is the meaning of average speed. Okay, what is the meaning of average speed? These are all basics. Baba ये खुलिए तो नहीं उसको पूरा खानदान को लिखवा. Now see here, what is the meaning of average speed? Now just see, I'll go on a small example. A boy has traveled distance d1, that is 10 meters, in time 2 seconds, and next 20 meters he has taken how much? Let us take 4 seconds, and again he has traveled next 40 meters and he has taken just again 4 seconds only. Okay, so and so on. See here, so what is the thing you are going to imagine here? This is d1, this is d2, and this is d3, and this is t1, and this is t2, and this is t3, and it goes on continuous like that. Then what is the meaning of an average speed? Average speed is nothing but total distance traveled by total time taken, isn't it? So total distance traveled by total time taken. So we average, what is the formula here? Total distance means you have to add them. So d1 plus d2 plus d3 plus and so on, divided by t1 plus t2 plus t3 plus and so on, like this, isn't it? Okay, so ये होगा. It's a general formula. Okay, तो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं छोटू? This is called as general formula. So whenever I write GF, you should write general formula. गर्लफ्रेंड नहीं बोलना रे छोटे, इससे पहले बोला था नहीं तू? बोला था नहीं? ऐसा नहीं बोलना, हमें अच्छे बच्चे ऐसे नहीं कहाँ बोलते, ऐसे बात नहीं बोलते है नहीं. क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्मूला. सो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे.
Now, so once you understand what is an average speed, we shall go for the next topic, that how many types of average speeds are there. ठीक है? How many types of average speeds are there? See, these many average speeds are there. We are discussing about some of the basics. So first thing is average speed. Okay, what is this, बाबू? कौन कौन सुने ये? तुम्हें भी सुने फर्स्ट क्लास में बोले हम ये? हाँ. Did you listen to the first class? Yes. Okay. So what is this? This is called as distance average speed. And what is this? Time average speed. And what is this? This is case 1 and this is case 2. Okay, case 1 and case 2. At that time we told the concepts. Here we'll do the problems directly. Concepts के साथ साथ problems भी करेंगे. So this is about the basic concept of average speeds. That average speed is equal to this much. So don't bother about the writing of notes. This total PDF is sent to you. जो सब PDF है तो WhatsApp group को भेज देंगे आपको. And this video will be also sent it to you. You can revise at any time. Okay, so now the first thing is distance average speed is there, no? So you write distance average speed. Distance average speed. Okay, so how are you going to discuss about distance average speed? See here, there was a boy. What is your name, my dear? Yeah. Abrar. Okay, see, Abrar has traveled first 10 kilometers and he has taken nearly 60 kilometers per hour time. The speed of Abrar was 60 kilometers per hour. Next, what he has done? Next distance, next 10 kilometers he has traveled, but his speed decreased 40 kilometers per hour. Previously speed, same distance, but speeds are different. Okay, because he was very active here for 10 kilometers. Remaining 10 kilometers he is sleeping while driving. कार में सो जा रहा हूँ, मार रहा. फिर जिंदा हूँ कि नहीं देख ले रहा आउट को. अरे हाँ जिंदा हूँ. ट्रैक पे जा रही गाड़ी. फिर थोड़ी देर पे ऊँगा. वाह बढ़िया भाई. हाँ तो गिड़ गाड़ी देखा तो रोड पर जा रही क्योंकि स्ट्रेट रोड है. एक झपकी मारे तो वहीं रहती वो. ऐसा बहुत बार हुआ मेरे साथ. जब से कौन नहीं बैठ रहा कार में मेरे, इन्हें झपकियाँ मारता है बोल के. अरे खाता सोता रहता है कभी भी बोल के. कोई भी नहीं बैठते कार में. और ये सीक्रेट में छुपा तो नहीं तो कोई भी नहीं आता मेरे साथ. एक ही चैनल चला था जनरल में भाई. सब जने को लेकर जाना होगा तो मैं बैठा लेंगे. Okay, so distance d1, d2 with speeds v1 and v2. Okay, so what is our girlfriend telling, my dear? GF क्या बोल रहा? छोटू तेरी गर्लफ्रेंड क्या बोल रही, जरा बोल फार्मूला. नहीं होने वाली है यार. Okay, so general formula is V average is nothing but d1 plus d2 by d1 plus d2. Try to understand here. See, first distance and second distance. Speeds are different, but there is no discussion of time. Replace time now. Okay, so first adha distance, next adha distance, that much only given to us. First half of the distance and next half of the distance is given to us, isn't it? Nothing else is given. There is no scene of time here. Time is not given. So replace it. Usko replace kar do. Replace it. So what will you write now? See, V is equal to distance by time. So time comes to the upward, so we get distance by velocity downwards. Similarly, we get T1 is equal to D1 by V1, T2 is equal to D2 by V2, isn't it? अभी time नहीं है, bad time for us. So let us replace the time. What will you write? V average is equal to D by 2 plus D by 2 by T1 means what will you write? T1 is okay. और एक step लिखेंगे हम so that it will be easy for you to understand. So first thing is first you replace the distances D1 by V1 plus D2 by V2. That's it, isn't it? So next thing, what will you do? But you know D1 is also D by 2, D2 is also D by 2. We just write D by 2 plus D by 2 divided by D by 2 by V1 plus D by 2 by V2, isn't it? So सबको लेको जाता है मालूम है. Okay. Okay, then what will you do next? D by 2 if you common out 1 plus 1. Again D by 2 if you common out 1 by V1 plus 1 by V2. So D by 2 gets cancelled 2 in the numerator. So what will you write? V1 V2 as an LCM. So V1 cross multiplication V1
and here cross multiplication V2, LCM is over, then your formula is V1, 2V1, V2 by V1 plus V2. Okay, so this is called as average speed. Average speed, or it is also called as mean speed. Mean, average value or mean value. Mean is nothing but average. Okay, so average bolo, or you can say mean, both are same. Average bolo, mean bolo, both are same. Okay, so here, and this is a formula which is called as harmonic mean. It is called as harmonic mean. Whenever the formula comes like this, 2V1 V2 by V1 plus V2, it is called as a harmonic mean. Understood? Okay. So let me check out what is going to happen now here. So that is the formula which you got now after doing so many derivations. And you know the problem is like this: a body has traveled 10 kilometers with this speed, remaining 10 kilometers with this speed. Then what is an average speed? Our shortcut formula is ready. What is that? That is the shortcut formula. क्या लिखेंगे अभी? 2 into V1 means 60 into 40 divided by 60 plus 40. How much it is? 4,800 divided by 100. So 100 gets cancelled. Your answer is 48 kilometers per hour. So what did we discuss now? We discussed only case 1 now. Okay. In distance average speed, we have discussed only case 1. First half distance, next half distance. That's it. Already सुने नहीं तुम लोग? So we'll do some more problems here based on this, which is asked in previous year. अभी book खोल के देखो आप लोग. Motion in one dimension. There will be some of the bits which you can solve here. Okay. Okay. Now just see here. Okay, beta. See the first problem, 2023. This is the first problem asked in 2023. Now, directly you can solve the problem without any help by yourself. You can solve the problem. I'll tell you the situation. I'll draw the situation on the board. Situation problem में क्या है वो मैं आपको board पे बताता हूँ. Okay. What did he say? You know, just see. What did he say in the question? See, a body has traveled first half of the distance with speed v, and next half of the distance with speed 2v. That's it. कौन सा क्वेश्चन है? 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन बेटा. समझ में आ रहा है? बुक नहीं लाए बेटा? नहीं लाए? कल से ला लो. So, my dear, this is case 1, no? Whatever the latest case we have discussed, on this case only previous year question was asked. So what is your answer, my dear? तू कर सकता ना बेटा? कर सकता. आजा आजा प्यारे. कौन सी क्लास में जा रहा बेटा तो वो? नहीं तुम जा कर दो. वो सब नको बेटा मेरे को. फाइनल शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके डाल देना. वेरी गुड, वेरी गुड. डाल दो, सब्स्टिट्यूट करो. मैं करूँ? पंख हो रहा बच्चा, बच्चे ज्यादा है नहीं. Now just here, the simple thing is 2 into v into 2v. Okay, v1 v2. This is v1 is v, and what is v2? This is 2v, and v1 plus v2 is nothing but v plus 2v. So ये क्या हो गया? 2 to the 4. This is going to be 4v square, and this is going to be 3v. You can just cancel out like this. V average is nothing but 4v by 3. ठीक है? Your answer is ready. You can just check out the next. कौन सा क्वेश्चन चेक करिए आप? You can just check out the second question. Second question is asked in mains 2011. क्या बेटा? Mains 2011. You can just tell me what is the correct answer in that. क्या है बेटा करेक्ट ऑप्शन? कौन बोलते हैं? तुमको किताब नहीं मिली? अरे रे कितना गलती हो गया आज. चलो ऑप्शन सी. वेरी गुड, ऑप्शन सी करते देखो. कितने क्लास रहे तू? 7th तो अब जब भी बोल रहा आंसर. जब भी तो गर्लफ्रेंड ज्यादा है. इतने छोटे बन में इतने बड़े बड़े आंसर बोल रहा. ठीक है, वेरी गुड. करेक्ट ऑप्शन बोल दिया. आई ट्रेन हिम फ्रॉम 1 week. ही सॉल्व नीट क्वेश्चंस. ही इज ओमन व्हिच क्लास? 7th. तू कितना है? 6th को जाना तू. दैट फेलो सॉल्व नीट क्वेश्चंस. वी ट्रेन लाइक दैट फेलो. दे आर माय फ्रेंड्स sons, my friends sons. He want students to solve NEET problems only.
ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, करे सक्सेस हुए बच्चे बोल सकते हैं आंसर। ओके, सो वेरी गुड, तो आंसर इज रेडी, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। ओके, तो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन माय डियर? अभी थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो। ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद सच ए स्पीड एंड रिटर्न्स टू एक्स विद सम अदर स्पीड, इजंट इट? ओके, तो व्हाट इज दिस एक्चुअली? देख लो अच्छी तरह से, ये जो है ना, ओके, तो ये एवरेज स्पीड में से डिस्टेंस एवरेज स्पीड है ना, वी हैव डिस्कस द फर्स्ट केस, सेकंड केस इज स्टिल देयर इन डिस्टेंस एवरेज स्पीड, ठीक है? इफ आई टेल दैट विदाउट एनी हेल्प यू कैन डू दिस प्रॉब्लम, बोल सकते हैं आप लोग आंसर उसका। ओके, तो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, यू नो? अभी देखो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, लेट इट बी दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर स्कूल और कॉलेज, व्हाट इट मे बी। तो हियर what did you do? You have traveled from here to here, okay, with certain velocity v1. Again you return to the same place with the speed v2. Okay, that's it. He didn't give anything, only speeds have been given. So I will tell you that if the speed was 60 kilometers per hour while going from x to y, while returning if the speed is 40 kilometers per hour, then what is an average speed? This is the question, average speed. And this is the case of distance average speed. Why? Because x to y, x to y, what is the distance? D, and y to x also d only. सुबह घर से स्कूल को गया 10 किलोमीटर गया, ओके, यू ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर्स, लेट अस इमेजिन, फ्रॉम हाउस टू स्कूल, एंड द इवनिंग also from school to house the same distance, same distance does not change. शाम में डिस्टेंस क्या तो कम होता क्या? इट इज अ रोड, तुम्हारी चड्डी का इलास्टिक नहीं है, सुबह में खींचे बड़ा हो गया, शाम में छोटा हो गया, ऐसा नहीं रहता, होता सेम नहीं जी, रोड बड़ा हो रहा, अच्छे चल रहे हैं, इलास्टिक जरा बड़ा होता, ऐसा नहीं। वो 4 महीने चड्डी पहने तो इलास्टिक फिसल जाता 4 महीने कंटिन्यू से, इसलिए बदलते रहना, बोलो बदलते रहना, नया खरीदो अभी टाइट रहता। सो रोड इज नॉट लाइक दैट, सो आई एम टेलिंग सम ह्यूमरस जोक्स सो दैट डोपामिन हार्मोन विल रिलीज, हैप्पी हार्मोन्स। इसमें क्या होता है, बच्चों को जल्दी याद रहता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया समझो, अगर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो चड्डी आ जाता है, चड्डी बोले थे सर, आ गया आप चड्डी, अरे चड्डी इंटू चड्डी बाय चड्डी प्लस चड्डी गिव्स यू मोटिवेशन। ओके सर, वेरी गुड, दैट्स इट। सो व्हाट इज योर जीएफ बाबा? तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या बोल रही, बोलो फॉर्मूला क्या है? गर्लफ्रेंड क्या की बोली ना जी, गलत बोल रही, तो झूठ बोल रही, क्या बोली? फॉर्मूला नहीं बेटा, जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला क्या है? व्हाट वाज द जनरल फॉर्मूला? सी हियर, देयर आर मेनी सिचुएशंस यू यूज दिस जनरल फॉर्मूला, बट देयर आर ओनली 2 सिचुएशंस, गया और आया, ओके? सो गया एंड आया, ओनली 2 सिचुएशंस आर देयर। तो जीएफ क्या बोलती? तुम दोनों चेहरे, कोई भी नहीं आजू बाजू को, क्या होता? डर होता, क्या होता? अब बोला देख डर है सर का, अब हैप्पी हार्मोन्स बाहर निकल रहे हैं इसके, कौन नहीं बोले तो, कौन तो है वो तो डरता था, दिल की बात नहीं बोल सका, ठीक है? तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? सो d1 plus d2 by t1 plus t2, but there is no discussion of time here. किसके हाथ में वॉच नहीं, सब राउंड होना चाहिए वहां, एक भी हाथ में वॉच नहीं, क्या करेंगे? तो टाइम है बैड, टाइम है बैड, ये जिंदगी सैड है, ऐसी कंट्री करो तो मैड होते लोग आदमी। तो व्हाट विल यू डू? सो d1 plus d2 by t1 will become d1 by v1 plus d2 by v2. But you know one thing, d1 is d, d2 is d, same thing we will apply. So abd, this is d by v1 plus d by v2. See what is going to happen now? va is nothing but d common karo 1 plus 1, इधर भी d common karo 1 by v1 plus 1 by v2. C is getting cancelled. So 2, okay, LCM is v1 v2 and v1 into 1 is v1, v2 into 1 is v2. So v average का नया फॉर्मूला क्या है? 2v1 v2 by v1 plus v2. See, situations are different, cases are different, but answer is same, फॉर्मूला इज सेम, सिचुएशंस अलग अलग है, मगर फॉर्मूला सेम है, बिकॉज डिस्टेंसेस आर सेम, देयर आल्सो हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, हियर गोइंग डिस्टेंस एंड कमिंग डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंसेस आर सेम योर फॉर्मूला विल नॉट चेंज, इट्स गोइंग टू बी द सेम फॉर्मूला, ओके? x to y जाओ, y to x जाओ। अभी व्हाट इज योर आंसर नाउ? क्या बोलेंगे बेटा आंसर, आप बोलो। वेरी गुड, देखे नहीं कितने क्लास अभी तुम्हें? 9th जाना, जरा खाओ पियो, नहीं तो छोटा बच्चा लोग बच्चे गोद लेती तुम्हारा, समझे नहीं? 9th में कैसे रहते देखा ना, नारायण में जाके देखो, मैं छोटा देखती, सार को डाउट कैसा पूछते मालूम बच्चे, सर एक चप्पल मैं ठहर को रहता हूँ,
ఏమో చెప్పు బోల్ ఎన్నో క్లాస్ में होती इंटर फर्स्ट ईयर बोलती हूँ ऐसा रहती मेरे को ये मैं इंटर पढ़ो बेटा सर मैं बास्केटबॉल प्लेयर सर फोर्थ क्लास से बास्केटबॉल खेलो ऐसा उछल के नीचे ग्रेविटी खींच डाली मेरी बहुत लंबी हो गई मैं हाँ इसलिए बहुत हाइट रहते बच्चे अपन खा पी के अच्छा हाइट बनना अब देख तू बस नहीं चल सका समझ बच्ची उठा कर ऊपर अंदर बस तो पावरफुल रहते ठीक है ऐसा रहना अच्छा खाना पीना तो समझ में आया आंसर भी आ गया ओके ठीक है नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द प्रीवियस केस हियर एक तो क्या है एवरेज स्पीड में डिस्टेंस एवरेज स्पीड है टाइम एवरेज स्पीड में देयर इज नो सब केसेस ओनली सिंगल केस ये पूरे केसेस मिला एक सूट केस एवरेज स्पीड का ठीक है ये हमेशा साथ चलते रहना सूट केस समझ मेरी बात अब देखो कमाल की बात बोलते हुए मेरी शादी हो गई गांव में ऐसे गांव में बकर खेड़ा टाइप कर लिया वैसा मैं सिटी के बच्चा डेंजर मालूम मेरे को सताती खेड़े गांव में कर लिया अब हमें जो है ना बच्चे को देखने जा रही गांव को ट्रैक्स में जा रही तो रोड के साइड में अदना बैठ को है अंधेरे में बीड़े के जो है स्पार्क्स दिख रहे मैं बोला ये कहीं को है हम गाड़ी अंदर घुसते सो उठ को ठहरे बोला क्या रिस्पेक्ट है मेरे को अभी शादी भी नहीं खाली बच्चों को देखना यार उधर रिस्पेक्ट गाँव वाले में करने का फायदा है क्या सोचो ट्रैक्स मार देर बैठ रही अरे रेस्पेक्ट खत्म जब समझना अरे अब तो ठहरे थे तभी दूल्हे को अंदर आने के वास्ते जब भी बढ़ गया अरे तेरे को रेस्पेक्ट कौन दे रहे कौन दे रहे नो सेल्फ रेस्पेक्ट के वास्ते उठेगा ऐसा वो क्या है बोले तो हाथा में बाटला नहीं देगी अभी हाँ पापा समझ में आया सेल्फ रेस्पेक्ट के वास्ते उठे बैठे थे तो मैं नहीं देख सकता उठे तो उन्होंने समझ मेरी बात गाँव में वैसे होता गाँव के बाहर रोड था नहीं वो करेंट के स्थान पर चुड़ा बैठते कैसा ऐसा रोड पर सैडान बैठ जाते क्या रे घरा नहीं के अंदर तो बाहर के नहीं बाहर हवा लगता रहना सिगरेट में से धुआं जाते रहे तो जब भी कहते उनको मूड आता सो उसको मूड क्या आता कि मेरे को नाल बारा बाबू ये क्या आदमी आ रहे वही बोलते बोला इतना रेस्पेक्ट बोल के समझा मैं गलत फैमिली में हूँ मैं बोल के समझा गलत फैमिली में हूँ अंदर अब जाना है ना दैट वाज द सिचुएशन सो टाइम एवरेज स्पीड व्हाट इज दिस क्या बोला टाइम एवरेज स्पीड होना है ना अपने को सो टाइम एवरेज स्पीड में क्या है मालूम सिचुएशन अच्छी तरह से देख लो ओके सो यहां पर ही डजंट से एनीथिंग ही सेज ओनली वन थिंग तुम्हारा नाम क्या भाषा साद यस मेरा बेटे का नाम भी सादिश है साद ओके साद क्या करा पहला घंटा 1 आवर फर्स्ट 1 आवर ही वाज वेरी फास्ट व्हाट वाज हिज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1 आवर क्या हुआ थक गया बेचारा क्यों कार में नहीं था कौन सी गाड़ी पे था एटीएम बाबा के पास एटीएम लिया एटीएम गाड़ी ले लिया और वो कैसे रहते मालूम सामने हवा कम पीछे ज्यादा लगती बिकॉज सीट इतना बेंड है इसका इतना बेंड है सामने हवा कम लगती पीछे ज्यादा लगती समझे नहीं वो केटीएम गाड़ी है नहीं? तो गाड़ी को देखा तो समझ में आता कि गाड़ी को गैस ट्रबल है पीछे उठा रहा तो ऐसा है वो देन व्हाट हैपेंस तो पहला 1 घंटा 60 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा घंटा कितना 40 किलोमीटर पर आवर तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम एवरेज स्पीड क्या बोलते हैं इसको टाइम एवरेज स्पीड बिकॉज टाइम इज मेंशन्ड हियर तो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस यू विल अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम एंड द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम कोई तो प्रॉब्लम है बोला सो क्या बोला देखो अच्छी तरह से है प्रॉब्लम नहीं है उसका अట్లాంటి प्रॉब्लम ఉందా ऐसा प्रॉब्लम फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बोला हाफ टाइम का प्रॉब्लम नहीं दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन లో हाफ टाइम प्रॉब्लम లేదు बट नीट లో లేదు కానీ JEE मेंस లో అడిగాడు हाफ टाइम so first half of the time and next half of the time here it is given now what will you write you just see so acha then what is our GF V average is nothing but D1 plus D2 by T1 plus T2 what is not discussed in this situation distance is not discussed that's what is called as time average speed distance is not discussed so what if it is not discussed क्या करेंगे अभी replace कर दो उसको then what we will write V is equal to D by T so D is nothing but VT so D1 means V1 by V1 T1 D2 is equal to V2 T2 why because V1 is nothing but D1 by T1 and V2 is nothing but D2 by T2 so D1 means cross multiplication V1 T1 isn't it so I don't write distance now I have to replace because situation में कभी discussion ही नहीं है problem लो discussion ही ले तो distance गुరించి हैं कहीं को रखो distance है we will replace that one so what will write instead of D1 we write V1 T1
we write V2 T2, we write T1 plus T2, and you know T1 is how much? T by 2. T2 is how much? T by 2. So V average is nothing but V1 T by 2 plus V2 T by 2 divided by T by 2 plus T by 2. So T by 2 common, V1 plus V2 divided by T by 2 common, 1 plus 1 getting cancelled. Now what is get? What are you getting now? So V average is nothing but V1 plus V2. 1 plus 1 is nothing but 2. So you got the answer. It is just like, it is called as arithmetic mean. Arithmetic mean. It is just like common average, arithmetic average. ठीक है? हाँ हाँ, किसी को बोले भाई तेरी उम्र क्या है रे? बोला 30. बीवी की उम्र क्या है? 20. अरे इतना डिफरेंस. मेरा फ्रेंड एक जना मसूद बोल के मेरे स्टूडेंट कुछ कर लिया. अरे तेरी ये कैसा होगा? आई थॉट दैट गर्ल इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर. अब वही बच्चे का रिश्ता उसको गया कर लिया. डिफरेंस 10 ईयर्स. अब हाँ बाबा, तो तुम्हारे दोनों का एवरेज क्या है भाई? बोले तो इसका 30, उसका 20. एवरेज 30 प्लस 20 बाई 2, 25 इज एन एवरेज. इट्स ए जनरल एवरेज ना, कॉमन एवरेज बोलते हैं उसको. दोनों का अभी अभी देखो मेरा मार्क्स कितना है बोल रहा बच्चा भाई. फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मेरे को 60% आया, सेकंड यूनिट टेस्ट में मेरे को 80% आया. एवरेज क्या हो गया? सम ऑफ द मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मार्क्स. सम ऑफ द मार्क्स में 60 प्लस 80, नंबर ऑफ मार्क्स में 2 मार्क्स ओनली, 2 यूनिट टेस्ट का मार्क्स बाय 2. इट्स ए जनरल एवरेज. इट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक एवरेज. एंड एवरेज बोलो, मीन वैल्यू. सदी में अरिथमेटिक मीन हमारे ना मीन समझना, कभी कभार मीनिंग्स को समझना. समटाइम्स वी ट्राई टू कन्वर्ट प्योर इंग्लिश इनटू हिंदी, मीनिंग चेंज हो जाता. अब देखो हिंदी टीचर एक्सप्लेन कर रही तो बच्चे क्या कर रहे? बाहर से बंदर जा रहा, हाय बंदर, खिड़की निकाल के देख रहा. टीचर को हिंदी आता, इंग्लिश नहीं आता. हिंदी में सोची, अरे बदमाशा, मेरे रहते हुए बंदरों को देख रहा है, इसको दरिश नहीं मेरा. अब इसको इंग्लिश में बोलना रहे. इंग्लिश में बोले तो गुस्से में ऐसा दिखता, मेरे गुस्से की भी वैल्यू रहती. हे स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू सीइंग मंकीज आउटसाइड व्हेन आई एम हियर? इसकी प्योर हिंदी को कन्वर्ट कर दिया. अरे बाहर के बंदरों का देख रहा, बंदरिया है ना, और इसमें मेरे में क्या कमी है देख, सब है. वैसा भी कर दो भाई. इट्स नॉट लाइक दैट. डोंट कन्वर्ट प्योर इंग्लिश इनटू प्योर हिंदी इनटू इंग्लिश, मीनिंग्स विल चेंज. बट दिस इज ए सिनोनिम. एवरेज बोलो, मीन बोलो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है. अब केमिस्ट्री का लेक्चरर क्या कर रहा है? पीरियडिक टेबल का कैलेंडर लाके लगा दिया. बच्चों को रोज देखते रहे तो एग्जाम के अंदर वो दीवार पर जितना भी पीरियडिक टेबल है उसका पिक्चर एग्जाम में दिखता बोल के लगा दिया. वो नीचे गिर गया हवा को. पहले दिन आके देखा, कोई भी नहीं उठा रहा, बदमाश. दूसरे दिन आके देखा, कोई भी नहीं उठा रहा. ओके, अब बच्चों को डांटना शुरू कर दिया. पहले तेलुगु में सोचा, ఈ నా కొడుకులు కింద పడింది పైకి ఎత్తి పెట్టట్లే, మీరు చేస్తారా? నేను ఎత్తి పెట్టాలా? నేనే ఎత్తి పెట్టాలి. ఏ I am seeing from 2 days, you don't have any respect. Periodic table is lying down. Will you hang it or shall I hang myself? Huh? Sir, मरो नको, मैं हूं. We are there, we will hang. Don't hang yourself. Okay, इसका मतलब क्या मालूम? ऊपर खूटी को तू लगाता नहीं, मैं लगाना. वो इंग्लिश में कन्वर्ट होता क्या है? You will hang or shall I hang myself? बोल तो मैं हाथ लगा को मर जाता हूं, मीनिंग आता. अब सर मर जाएंगे रे भाई, सेंसिटिव है सर का है केस. फिर पूरा केस हमारे को आता, केमिस्ट्री मिस होता, बाकी चैप्टर कौन पढ़ाती बोलो सर, फिर चाहो दैट सर मैं मुन्ना. अरे मर रहा हूँ बोल के कौन बोल रहे तेरे? मैं लगाता हूँ बोल रहा हूँ. बट इंग्लिश में चले हैंग माई सेल्फ बोले तो हैंग बोले तो मर जा रहा हूँ. समझ आ रही बात? मीनिंग चेंज हो गया. अब टीचर बोल रही है इंग्लिश, प्योर इंग्लिश, ए ओपन द विंडोज, लेट एयरफोर्स कम इनसाइड. अरे इसकी पूरा एयरफोर्स आती है विंडोज में से. हाँ, एयरफोर्स बोलते क्या, जेट प्लेन्स आते हैं उसमें से. ओके, सो लाइक दैट सिनोनिम्स आर देयर. अरिथमेटिक मीन बोलो, हार्मोनिक मीन बोलो, डिफरेंट है, मगर मीन एंड एवरेज का मतलब सेम. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग नो? सो तो एवरेज स्पीड, ये सारे केसेस खत्म हो गए. ऑल द केसेस आर ओवर. बट आई विल टेल यू मिक्स्ड केसेस. मिक्स्ड केसेस बोलूंगा अभी, यू हैव टू सॉल्व दैट वन एंड यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ मिक्स्ड केसेस बोलूंगा अभी. देखो, आई विल क्रिएट वन सिचुएशन. दिस इज कर्नूल एंड व्हाट इज दिस? दिस इज जडचर्ला. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हैदराबाद. लेट अस टेक फ्रॉम कर्नूल टू हैदराबाद, कर्नूल टू जडचर्ला 100 kilometers. Okay, and from Jadcherla to Hyderabad how much? Still again 100 kilometers. Okay, it's okay. Then after that, now abhi dekho, in the second part, in the next 100 kilometers, he traveled from Jadcherla to Shadnagar. Okay, Shadnagar, how much?
1 hour he took. And from Shadnagar to Hyderabad, he took 1 more hour. But here the speed was different. Here the speed was different. But in the first case, V naught. See, from Karnool to Hyderabad, bus traveled with a speed of 100 kilometers per hour. 100 kilometers per hour. Okay, but from see next half distance is divided into two parts. First 1 hour, second 1 hour. First 1 hour it traveled with a speed of 60 kilometers per hour. Okay, and next 1 hour it traveled with a speed of 40 kilometers per hour. You just try to understand. There are two cases here. क्या क्या cases है? एक तो DAS है, एक तो TAS है. एक तो distance average speed, time average speed. Now decide which is going to be the time average speed here. Can you tell me which is going to be the time average speed here? बोलो. Very good. The second part is said to be distance average speed 9. See, main ये क्या है? ये पूरा situation क्या है? What is this total situation? This is a distance average speed, but this is a sub situation which is called as time average speed. Hope you are understanding. See, half distance and half distance. This is d by 2 and this is d by 2. But in the second d by 2, there is t by 2 and t by 2. Hope you are understanding. So, second part is said to be time average speed. Then what is your answer in the time average speed, my dear? क्या करेंगे अभी? So here you will write V average. Time average speed means V1 plus V2 by 2. V average is nothing but 60 plus 40 by 2. V average is how much? 50 kilometers per hour. It's okay. Now, what is V1? In the time average speed, again, we write V1, which is V naught, which is said to be 100 kilometers per hour. In the second part of the time average, this is distance average speed. Second part, which is said to be V2, V average, which is said to be 50 kilometers per hour. And this is said to be distance average speed. This is a arithmetic mean, and this is a harmonic mean, where the formula is V average is nothing but 2V1, V2 by V1 plus V2, which is 2 into 100 into 50 divided by 100 plus 50. Hope you understand now. Okay, very good. तो अभी हम इसको, this is a problem. I explained in the form of a problem, and that too which is very very known to you. You know the distances, you know the names of the cities. But if he asks in a general form, what did he say? No, he will say just he will travel first half of the distance with V naught, and next half of the distance, in first half of the time he travels with the speed V1, and next half of the time he travels with the speed V2. Then find the total average speed, he says. Then what will you do? You do one thing here. You will write this is going to be time average speed, and you just write V1 plus V2 by 2 because it is a arithmetic mean. But what is about the total situation? Total situation is distance average speed. Then what will you write? V average net is 2 V naught. So your formula is 2 V1 V2 by V1 plus V2 for distance average speed. So 2 V1, here V1 is V naught. Here V1 is V naught, but V2 is V1 plus V2 by 2, isn't it? So what will you write? 2 V naught V1 plus V2 divided by 2. Divided by V1 plus V2 means V naught plus V1 plus V2 by 2. So 2 gets cancelled. So what is left now? V naught into V1 plus V2 divided by LCM. If you do, it is going to be 2 V naught plus V1 plus V2 whole divided by 2. समझ में आ रही बात? It's maths. समझ में आया बेटा? Very good. टीचर का बेटा है भाई तू. Okay. टीचर के बच्चे. ओके, समझ में आ रहा ना? ये समझ में आ गया ना एलसीएम? अब देखो बाई 1 कर दो. कुछ तो भी नहीं समझ आया तो बोल देना मेरे को बीच. If you don't understand, tell me there itself. So this is V1. So LCM is 2. 1 into 2, 2. 2 into V naught, 2 V naught. Here V1 plus V2 directly you write. So what is your final situation, final solution? So you write 2 V naught in the numerator, and we write V1 plus V2 divided by 2 V naught plus V1 plus V2. So this is called as a mixed case. It's a mixed case of time average speed and distance average speed. थोड़ा ऊपर वाला ज्यादा लेवल का प्रॉब्लम क्वेश्चन है. आई మూవీ చూసావా? అంతకు మించి అంటాడు. అరే నువ్వు సంపాలని నువ్వు కదరా? నేను లేదు సంపాన అంతకు మించు और सतातो तेरे खाली मारता नहीं तड़पा के मारता बोलता. ओके ऐसा. नेक्स्ट सिचुएशन. सी मिक्स्ड केस लो सेकंड केस. In mixed case we'll discuss second case. What is this? Just see here now. First half of the time he is traveling with the speed V naught. And now next half of the time is again divided into sub situations. Okay, what is that? Half of the distance with speed v1 and next half of the distance with speed v2. बेटा समझ में आ रहा तुम्हारे को? तकलीफ हो रही क्या? समझ आ रहा तुम्हारे को?
because you are generally IP students are, and these are very genius students. They are only 10th class and but they want to learn NEET syllabus. अब वो तो देखो डॉक्टर है, उसको तो स्टेथोस्कोप के साथ ही पैदा हो गया है नहीं? इवन तुम टॉयलेट में बैठे स्टेथोस्कोप लगाना बेटा, उतना एम रहना स्ट्रांग, ऐसा दिखना है इसकी साथ ही पैदा हो गया बचपन से, ये खिलौना स्टेथोस्कोप तुम्हारा आपसे है नहीं? डॉक्टर बनना है, पहले अपना इलाज कर लेना, ठीक है? So, what is this, my dear? What type of situation is this? क्या ये दास है ना? Distance average speed है ना? आधा distance. But what about this? Time average speed. तो हम सबके सॉल्व करेंगे, वही we will solve for sub case. What is the sub case? Tell me now. It is nothing but 2v1 v2 by v1 plus v2. It is v average. Okay, but what is this average of averages? Time average speed. It's very simple. V0 plus VA by 2, because time average speed is nothing but arithmetic mean, where general average V1 plus V2 by 2. That's it. Okay. So what will you write now? VA is directly VA, but what is this? 2v1 v2 by v1 plus v2 whole divided by 2. Okay. So V average. You should just partial division कर दो. क्या करेंगे अभी? You write V0 by 2 plus 2v1 v2 by v1 plus v2 whole divided by 2. Okay, so it's nothing but 2, 2. So your answer is V0 by 2 plus V1 V2 by V1 plus V2. Okay, beta, समझ में आ रही बात? It's okay. So you can convert this into in the form of a problem. क्या है ये? This is Kurnool and this is Jadcherla and this is Hyderabad. Okay, so first 2 hours he is traveling with a speed of V0, and next 2 hours he is traveling first to 50 kilometers with the speed. How much? First 50 kilometers with the speed of 60 kilometers per hour. Next 50 kilometers with a speed of how much? 40 kilometers per hour. Understand? And first 2 hours he has traveled. What is that? With a speed of how much? Okay, 52 kilometers per hour. Acha, let me create the problem now. Once again, let us listen to the problem. We have to save the time. I will not write the question. I will announce the question so that if you see in the video also, you can hear the question. ये सारी चीजें यार दिमाग में रहना. Question answer. So a boy or a driver travels first 2 hours from Kurnool to Jadcherla with this speed, 52 kilometers per hour. Next, from Jadcherla to Hyderabad, same 2 hours he will take, because Hyderabad to Kurnool 4 hours total journey, 4 hours. And middle में क्या है? Shadnagar. There is a Shadnagar. Jadcherla to Shadnagar, it is 50 kilometers. The first 50 kilometers he was very fast, but after Jadcherla traffic will be there. City buses of Hyderabad will start slow हो जाता थोड़ा, 50 to 60 40 kilometers per hour. अब वो क्या बोलते हैं, वो अभी एयरपोर्ट का रास्ता शुरू हो गया तो फिर टैक्सी ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा होता, तो ही वाज डिक्रीजिंग इट स्पीड. तो बेटा अभी डायरेक्टली व्हाट विल यू डू? 60 40 हाफ डिस्टेंस क्या करेंगे? 2v1 v2 is nothing but 2 into 60 into 40 by 60 plus 40. So it is 4800. इनको मल्टीप्लाई कर दो by 100 कर दो, चले गया. तो what is your answer? 48. So first केस का 48 kilometers per hour. Second केस का क्या है? 52 kilometers. And the total situation is time average speed. Time average speed means it's just one v1 plus v2 by 2. v1 is v0 52 and this is how much? 48 by 2. कितना हुआ? 100 by 2 is nothing but 50 kilometers per hour, isn't it? Okay. Mixed case. Okay. तो ये प्रॉब्लम भी कर दिया तुम लोग. Okay. What is this problem? Okay. Fifth question we just see, which was asked in 1991. What was the question? I will write the situation. अब you will solve the problem. Okay. क्या है situation? देख लो अच्छी तरह से. एक का क्या है वो? What is this? Question number 5 asked in the previous years. A car travels a distance of 200 kilometers. 200 kilometers. If it covers the first half of the distance with a speed of 40 kilometers per hour, and next half of the distance with a speed of 60 kilometers. 40 60 देख के बेजार हो गया. 2 into 40 into 60 by 40 plus 60 is 48 kilometers per hour. आ गया ना आंसर? ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి? సబ్ కేస్ లో ఉంది. ఇక है सब केसेस में है. In सब केस this is one case, isn't it? तो आंसर చూస్తేనే చెప్పాలా, చూస్తేనే టిక్ కొట్టేశారు.